on YouTube. I'm going live on YouTube as well, but I thought let's just stream on Instagram as well. So today, before I go ahead and resume the story, let's do a quick recap of where we have been so far. So, folks, for those of you who are watching on YouTube, I'm going live on my Instagram as well. So I will be swapping in between. अभी तक की कहानी में we had two main pivotal characters. We had Ameer Arjun, who came from a really good family, went out, studied, invested a ton of money, but came back to his own town and realized that he's not getting a good job. जितने भी उसके दोस्त हैं वो भी सब लपंटर है, तो कुछ काम नहीं हो रहा है. But like his dad is pretty, like he's in a good space, so his dad is saying कि तुम explore करो. तो अभी अर्जुन हाथ पैर मार के अपने दो तीन दोस्तों के साथ ये sneakers और sweatshirts और ये street wear का कोई brand खड़ा कर रहे हैं वो लोग. On the other hand, we have Basic Dhruv. So Basic Dhruv and Ameer Arjun were in the same class. School mein they were in the same class. But Basic Dhruv had this tendency of, doing all assignments on time, doing everything absolutely perfectly, and, just making sure that he's doing everything, that is prescribed in the syllabus. But 2 years down the line, jab Basic Dhruv ko apni job mili, he spent 1 or 2 years in it and realized that he's not very happy about it. And throughout this process, उसने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया. He stopped taking care of his health, stopped taking care of his communication skills. Basically, he lost his hair, he lost his body. Like he didn't lose it, but like he's starting to lose it, right? Like he sees himself in the mirror and feels like I look 10 years elder than my age. So Dhruv has been trying to figure out how to become like a cool kid because he's just not happy with his life. And Dhruv has this very kick-ass guy in his college, जिसका नाम है Vikram. And Vikram is a complete badass. So Vikram comes into the office, जब मन करता है वो आता है, and he's close with the CEOs. He plays golf with them. अच्छा कमा भी लेता है, इतना नहीं कि कोई बुरा कमा रहा हो. He's from a pretty decent college, pretty decent degree, but now he's probably making more than Dhruv. So Dhruv is like, dude, मैं इतने अच्छे कॉलेज से हूँ, मैंने इतनी अच्छी डिग्री करी है, मेरे अंदर इतना दिमाग भी है, then why is this Vikram guy making more money than me? Right? And then उसकी और विक्रम की बात होती है, and Vikram is like, I'm gonna make you meet one of my friends. His name is Arjun. And Dhruv is like, shit, dude, I already know Arjun. And Vikram is like, great, let's go to the club on Saturday night. And मैं तुझे अर्जुन से मिलवाता हूँ. And he might be able to give you some lessons because Arjun knows everybody in and out, right, in the clubbing sector. तो इट्स फ्राइडे इवनिंग, ऑफिस खत्म हो गया है, एंड ध्रुव अपने घर पे है. एंड लाइक ध्रुव हैज जस्ट टेक्स्टेड विक्रम कि कल का प्लान ऑन है ना. लाइक ध्रुव को अभी भी डर लग रहा है कि शायद अभी भी लास्ट मोमेंट पे विक्रम प्लान कैंसिल ना कर दे. विक्रम इज लाइक, नो नो नो, द प्लान इज प्रीटी मच ऑन. And Dhruv was like, what do I wear? Because I've never been to a club, right? Like, what do you wear to the club? Because I have like office clothes, I have shirts, I have one pair of pants, one pair of shoes. And Vikram is like, I don't think it matters that much. Just you can wear something solid. So like Dhruv opened his wardrobe and realized he doesn't have any solid colors. Like all of them are checks. It's either check or like a collared t-shirt, something of that sort. तो ध्रुव ने बोला ठीक है, जो भी है, I'll get it sorted. तो सैटरडे नाइट आती है, एंड सैटरडे नाइट घर से बाहर निकलने से पहले ध्रुव कॉल्स हिज मॉम, बिकॉज एवरी टाइम ध्रुव स्टेप्स आउट ही हैज टू टेल हिज मॉम. लाइक बिना मम्मी पापा को बताए ही कैन नॉट स्टेप आउट. सो उसने अपनी मॉम को बताया कि मॉम, आई एम गोइंग टू द क्लब. मॉम के लिए अभी तो रात के 9 बज रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हो? एंड ध्रुव इज लाइक, नहीं एक पार्टी है एंड मुझे इनवाइट किया गया है. उसकी मॉम उसको बोलती कि कहाँ है, मुझे उसका नंबर भेजो, ये करो वो करो. ध्रुव कहता, मॉम आई कांट सेंड यू हिज नंबर, एंड लाइक क्लब का ये लोकेशन है, तो आप इट्स प्रीटी सेफ. तो उसकी मॉम को डर लगने लग गया. उसकी मॉम ऐसे बोलने लग गई कि क्लब में बेटा तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला देंगे, और रात को ऊबर से आओगे तुम्हें कोई उठा लेगा. उसकी मॉम ने क्लब में जाने से पहले ही उसको इतनी सारी फियरफुल बातें बता दी कि ध्रुव को पहले से ही डर लगने लग गया. अभी ध्रुव क्लब में घुसा भी नहीं है और उसको घर से ही इतने फियर्स और इतने रेपरकशंस के बारे में बता दिया गया है. और ध्रुव कहता कि मॉम, अगर अब मैंने आपकी बातें ज्यादा सीरियसली ले ली तो मैं कभी इन पीजी की 4 दीवारों से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा. सो लेट मी गो. ये विक्रम का नंबर है, अगर मैं घर वापस नहीं आता हूँ तो आप इस नंबर पे मिला लेना. तो ध्रुव गोज, मीट्स विक्रम, एंड दे गो टू द क्लब. एंड क्लब में भीड़ है, लाइक दबा के भीड़ है, राइट? लाइक ऑब्वियसली
लाइक इट्स सैटरडे नाइट, पूरी बाहर भीड़ लगी हुई है एंड ध्रुव का अभी से ही हार्ट बीट तेज हो गया है, क्योंकि ध्रुव को दिख रहा है कि इतना जनता खड़ी हुई है क्लब के बाहर, और अगर मुझे नहीं जाने दिया तो क्या होगा, और अगर मैंने अंदर किसी के सामने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, और अब मैं पता नहीं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, मेरी तो शर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, ऑल ऑफ दीज सेल्फ डाउट क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग इनटू हिज माइंड. एंड विक्रम इज प्रीटी चिल्ड आउट बिकॉज विक्रम का तो रोज का ही है, राइट? लाइक फॉर विक्रम इट्स अ प्रीटी बेसिक थिंग. तो विक्रम लेके जाता ध्रुव को बोलता जस्ट फॉलो मी, और विक्रम ऐसे पूरा क्राउड में से नेविगेट करते करते, ऐसे विक्रम ने बाउंसर को बोला कि हे, बाउंसर ने बोला हे, लाइक दोस्ती है, लाइक विक्रम एंड बाउंसर दोस्ती है. तो विक्रम ने बोला ये मेरा दोस्त है और अंदर चला गया. पर फॉर सम रीजन पता नहीं बाउंसर को दिखा नहीं दिखा, बाउंसर ने एंड में ध्रुव को रोक दिया और विक्रम अंदर चला गया, और बेचारे ध्रुव को बाहर रोक दिया बाउंसर ने. और बाउंसर कहता नहीं सर आप नहीं जा सकते. और फिर ध्रुव बोलता नहीं, बट मेरा दोस्त अभी, मेरे दोस्त ने अभी बोला कि मैं उसके साथ हूँ और वो अभी अंदर गया आपके सामने. तो बाउंसर बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये वो आपको उसको बुलाना पड़ेगा. तो ध्रुव ध्रुव ऐसे पैनिक हो रहा है, राइट? और ध्रुव ऐसे देख रहा है कि पीछे से बहुत ऐसे कूल बच्चे आ रहे हैं, उनको एंट्री मिल रही है, बाउंसर उनको बिल्कुल नहीं रोक रहा है. लाइक ध्रुव इज लाइक सुप्रीमली पिस्ड, ही इज अनॉयड, ही इज जस्ट लाइक डिसअपॉइंटेड, ही इज लाइक व्हाट डू आई डू. ही रियलाइजेस दैट ओ विक्रम इज बैक. तो क्योंकि ऑब्वियसली लाइक विक्रम अंदर गया और विक्रम को रियलाइज हुआ कि अबे भाई ध्रुव का है, तो वो पलटा और वो बाहर आया और उसने बोला बाउंसर को भाई ये मेरे साथ है. एंड देन विक्रम took Dhruv and they went inside. But like as soon as Dhruv entered the club, like the confidence levels are just going down and down. Like there's nothing making him feel good about himself. And he has fears कि मुझे कोई देख लेगा, मेरी ड्रिंक में कोई मिला देगा, all these preconceived notions. And अभी बाउंसर ने भी रोक दिया तो पूरा मूड चौपट हो गया है. But Vikram is like, don't worry, we'll have fun. They try to find Arjun, but obviously club में इतनी भीड़ है, Arjun इतनी easily दिख नहीं रहा है. So there's like this dance floor, and it's jam packed. And दूर से Dhruv can see Arjun, and Arjun is like dancing with girls. Like Arjun is having the time of his life. एंड विक्रम को कोई दोस्त मिल जाता है तो विक्रम अब हाय हेलो करने किसी दोस्त पे चला गया, तो विक्रम ऐसे ध्रुव को बोलता कि ब्रो मेरे 2-3 दोस्त आए हुए हैं, तो तू जा, वो रहा अर्जुन, एंड जस्ट गो टॉक टू हिम, ही ऑलरेडी नोज दैट यू गोना बी देयर. तो अब ध्रुव कह रहा है यार अब तो मुझे विक्रम ने भी छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, और मैं तो अर्जुन से वैसे ही इतने साल बाद मिल रहा हूँ और मैं वैसे ही अर्जुन को नालायक मानता था, और आज मुझे ही अर्जुन से फेवर लेने की नीड पड़ रही है. तो अर्जुन के पास जाता और लाइक बहुत भीड़ है, राइट? तो ऐसे ध्रुव को पूरा इधर-उधर होना पड़ रहा है और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ध्रुव कह रहा है मैं कौन-सी दुनिया में था और मैं कहाँ आ गया हूँ. And he goes and Arjun sees him and Arjun is happy. Like Arjun is at peak happiness and Arjun is like, whoa, bro, like what's up? Like I'm so happy to see you. एंड लाइक ऐसे ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा. ध्रुव कह रहा है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही खुश है मुझे देख के, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी इतना हैप्पी टू सी मी. एंड अर्जुन इज लाइक डांसिंग विद लाइक दीस टू वेरी प्रिटी गर्ल्स, एंड ध्रुव ने ध्यान से नोटिस करा कि उनमें से एक को ध्रुव 2.5 साल से फॉलो कर रहा है. एंड ध्रुव इज लाइक व्हाट, like he's actually in the club with girls that I follow on social media, like girls that I look up to, girls that I have a big crush on. Here's this guy dancing with them, having fun with them. And like 5 minutes Dhruv khada hua, but after 5 minutes Dhruv realized that he doesn't belong here, right? Because he's like, I don't know how to dance, nobody's looking at me, I don't know anyone. And Arjun कोशिश कर रहा है बीच में बोलने की कि ब्रो तू कहाँ है आजकल, तू मिलता नहीं, ये वो. बट ध्रुव को इतनी तेज बोलने की आदत भी नहीं है, मतलब ध्रुव अपनी अगर पीक आवाज में भी बात करने की कोशिश कर रहा है तो तब भी उसकी आवाज अर्जुन तक पहुंच ही नहीं रही है. तो ध्रुव ने बोला ब्रो अब क्या करूं, वापस जाता हूँ. ध्रुव ने बाहर गया, ध्रुव जो क्लब के बाहर का एरिया है, जो सीटिंग एरिया है, ध्रुव वहां जाके बैठ गया और अपना फोन खोला, प्रिटेंडिंग दैट ही हैज समथिंग टू डू ऑन हिज फोन ऑन अ सैटरडे नाइट. And he opens Slack. He doesn't even open Instagram because he's not active on Instagram. Dhruv has opened Slack. He's replying to some Slack threads, and it is just a scene to watch because while everyone around Dhruv is having the time of his life, basic Dhruv is just trying to get some work done on Saturday night. And moving forward, we'll figure out how this has helped him, how it has helped other people. But right now, he's just figuring out what to do. एंड थोड़ी देर बाद ही अर्जुन आ जाता है, एंड अर्जुन उसके साइड पे बैठता है एंड कहता है कि ब्रो लाइक व्हाट हैज बीन अप विद यू, लाइक हाउ आर यू हियर, व्हाट हैव यू बीन अप टू. एंड देयर वाज लाइक ब्रो ऐसे ही लाइक मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड मुझे नहीं पता था तू भी दिल्ली छोड़ के बैंगलोर आ गया है, एंड लाइक इट्स गुड टू सी यू ब्रो, लाइक तू तो लाइफ जी रहा है.
And Arjun ki like phati padi andar se. Like Arjun is in a pretty bad shape, but of course, like Arjun knows how to sell himself. So Arjun is sort of playing around, like playing with the game. Arjun कह रहा है हाँ bro, मतलब सब सही है, you know, it's a good life. जबकि अर्जुन को आज सुबह probably एक mental breakdown हुआ है, but he's just pretending that you know everything is sorted. And conversation थोड़ी आगे बढ़ती है, and eventually ध्रुव उससे पूछता है कि bro like how, like मैं I have been like working a lot, and मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं स्किल्स डेवलप कर लूंगा, एक अच्छी कंपनी में घुस जाऊंगा, आई विल हैव एवरीथिंग दैट आई वांटेड. बट अब मैं जैसे जैसे बाहर निकल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज दैट देयर इज मोर टू लाइफ एंड आई सी यू. और मुझे बहुत फोमो होता है तुझे देख के. मुझे लगता है कि यार मैंने लाइफ में किया ही क्या अगर मैंने एंजॉय नहीं किया, और मैं मॉडल्स के साथ डांस नहीं कर रहा हूँ तो फिर फायदा ही क्या. और अर्जुन ने बोला ब्रो, ब्रो एक सेकेंड, स्टॉप राइट देयर. लाइक तू अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, एंड व्हाई आर यू नॉट हैप्पी विद इट. तो ध्रुव ने अपने पूरे स्टैट्स बताए. ध्रुव बोलता मैं इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पे हूँ, महीने का मैं 2-2.5 लाख रुपए बहुत इजीली कमा लेता हूँ. 2-2.5 लाख रुपए कमा के मैं इनफैक्ट उसमें से 1.5-2 लाख रुपए बचा भी लेता हूँ. तो अर्जुन बोलता तो फिर प्रॉब्लम क्या है. इज लाइक बट आई एम नॉट हैविंग फन. Like I'm not having fun. I feel like I'm losing out, and I go on Instagram and I see these people and I'm like, dude, maybe I am missing out on something and I just want to be like you. एंड अर्जुन कहता तुझे विक्रम ने बताया कि हम क्यों मिल रहे हैं. एंड ध्रुव ने बोला नहीं, मुझे बस विक्रम ने बोला कि मैं तुझे दोस्त से मिलवाऊंगा. तो अर्जुन बोलता कि ब्रो मैं विक्रम को बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि मुझे एक जॉब दिलवा दे, मेरे पास काम नहीं है. और मैं विक्रम को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू जिस कंपनी में काम करता है मुझे वहां जॉब दिलवा दे, और मुझे वहां जॉब मिल नहीं रही है. तो विक्रम ने मुझे बोला कि मेरा एक बहुत स्मार्ट दोस्त है ध्रुव, उसको सब कुछ पता है टेक के बारे में, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ. एंड जब मुझे विक्रम ने बताया कि तू है वो ध्रुव, आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू ब्रो, क्योंकि आई नीड अ जॉब, लाइक आई नीड टू पे माय ओन बिल्स. तो ध्रुव ने बोला तुझे इतनी टेंशन क्या है बिल्स पे करने की, लाइक आई थॉट लाइक अंकल इज डूइंग प्रीटी वेल. अर्जुन इज लाइक या अंकल इज डूइंग प्रीटी वेल बट ब्रो इट फील्स लाइक शिट. Like every time I sit in his car, every time he gives me anything, there are restrictions to it. I am answerable to him for every penny that I spend. And it feels like shit because I don't have any confidence in myself. But Dhruv kehta, bro, you seem like pretty confident. Arjun is like, what is confidence to you? Like, what is confidence to you? Like, what do you think is confident in me? He's like, you look great. You're out there. Like, you're in the club. You're with girls. Like, you should be confident, right? Arjun is like, bro, तू मुझे यहाँ दिख रहा है और तू मुझे क्लब में देख रहा है, मैं नाच रहा हूँ, बट तुझे नहीं पता घर जाके मेरी क्या हालत होती है. लाइक तुझे नहीं पता घर जाके मुझे कितना गुस्सा आता है अपने ऊपर कि मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. आई डोंट हैव अ सिंगल पीस ऑफ कॉन्क्रीट वर्क टू शो टू एनीवन. एनी टाइम आई गो टू एन इंटरव्यू, वो बोलते बेटा आप क्या करते हो, आई डोंट हैव अ गुड आंसर टू दैट. लाइक यू हैव अ ग्रेट आंसर टू दैट. ध्रुव बोलता हाँ आई हैव लाइक मेनी प्रोजेक्ट्स, मेरे प्रोजेक्ट्स गिटहब पे है, बिहेंस पे है, ड्रिबल पे है, तुम कहीं भी जाओगे मुझे सब कुछ पता है. लाइक आई हैव अ प्रीटी बिग पोर्टफोलियो. अर्जुन लाइक एग्जैक्टली माय पॉइंट. So why are you not confident about yourself? And Dhruv started wondering, ki, what exactly is happening? Like Arjun wants something that I have. I want something that Arjun has. Both of us are struggling with something, thinking that the opposite person has everything. And obviously, like he started to connect the dots. And he's like, bro, maybe I can tell you what I know, and maybe you can tell me to be a little bit like you, right? Because I really want to do more stuff and I want to go out, I want to live my life. And Arjun's like, bro, that's okay, like that's completely okay, I can tell you, but it's not a one day thing. Because to be honest, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. Like मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, like मैं बचपन से ही अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं बचपन से ही like लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ, मैं बचपन से ही I'm pretty confident with girls. And Arjun asked Dhruv, like, when was the last time you dated a girl? And Dhruv was like, I haven't dated anyone. And Arjun's like, you haven't dated anyone? Dhruv was like, nahi, तूने कितने लोगों को date किया? Arjun's like, I'm probably on my like 6th relationship. And Dhruv was like, whoa, that's like amazing. Arjun is like, no, it is shit. Again, it is shit. That's what I'm saying.
Like, dude, like I'm telling you, when you date 5 6 girls, you realize that you've fallen into this slippery slope where there is no turning back. Like, of course, there is like a short term pleasurable stuff to it, like there's a lot of dopamine to it, but in the end, if you want to talk to someone, you don't have that one person, right? And it is better to have that one important person rather than to, like mess around and just waste your time. And there was like, bro, एक काम करते हैं, एक एक करके मुझे तेरे से दो तीन चीजें पूछनी है और तू मुझे बहुत प्रैक्टिकली बता कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, आज की पार्टी खत्म होने दे क्योंकि यहाँ बहुत शोर है, कल मिलते हैं, और परसों मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, तो अब तू बता तू मुझसे इस बात कैसे करेगा। तो ध्रुव ने बोला कि दैट इज ग्रेट, मैं खुद दिल्ली वापस जा रहा हूँ, लाइक मेरा शिफ्ट होने वाला है दिल्ली, देन वी शुड प्रोबब्ली सिंक अप इन दिल्ली। And Arjun's like, that's awesome. Like, okay, fine. Like, let's talk about this in detail and let's figure out what to do. इतने में बीच में विक्रम आ जाता है, and Vikram is like woohoo, like school reunion, and like क्या चल रहा है दोनों के बीच में, बातें क्या चल रही है, and Arjun is telling uh like Vikram की bro, like तू जिस बंदे को इतना हाइप कर रहा है उसको खुद इतना डर लग रहा है लाइफ में, इसको बता ये कितनी अच्छी पोजीशन में है। तो विक्रम बोलता हाँ मैं तो बोलता ही हूँ कि लाइक ध्रुव इज लाइक अ लेजेंड इन द ऑफिस, लाइक एवरीवन गोस टू ध्रुव एवरी टाइम दे हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। एंड अब थोड़ा ध्रुव का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है, right? Like when two people who Dhruv is looking up to are complimenting him, Dhruv is like, oh man, like something is there, like maybe I'm just not looking at myself in a good way. And Arjun can feel this, and Arjun told him and said that bro, I'm telling you, वो जो तू कह रहा है ना कि मुझे क्या बदलना चाहिए क्या करना चाहिए, it begins with this, like you need to have faith in yourself, like you really need to have faith in yourself. तो ध्रुव बोलता है मुझे है अपने ऊपर faith bro, but like आई जस्ट डोंट बिलोंग हियर, लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, अभी मैं बाहर गया मुझे बाउंसर ने भी रोक दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। तो अर्जुन बोलता बाउंसर ने रोक दिया मतलब, इज लाइक हाँ मैं क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा था और मुझे बाउंसर ने रोक दिया। तो अर्जुन ने बोला व्हाई डू यू थिंक तुझे बाउंसर ने रोक दिया। एंड लाइक देन ध्रुव की सारी इनसिक्योरिटीज बाहर आने लग गई, जो सारी फिक्शनल इनसिक्योरिटीज थी वो ध्रुव की बाहर आने लगी। ध्रुव ने बोला ब्रो प्रॉब्ली बिकॉज मेरे बाल उड़ रहे हैं, या मैं मोटा हूं, या मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। तो अर्जुन ने बोला अब तू एक मिनट रोक, और अर्जुन ने इधर उधर देखा और ध्रुव को 10 ऐसे लड़के दिखा दिए जो गंजे थे, जो क्लब में थे और एंजॉय कर रहे थे। ध्रुव ने बोला ओके फाइन, बट मे बी आई एम जस्ट नॉट फिट इनफ। अर्जुन ने और दो तीन लोग दिखाए जो कोई जॉर्ज क्लूनी जैसे नहीं थे, उनके कोई सिक्स पैक एब्स नहीं थी, दे वर नॉर्मल गाइज एंड गर्ल्स, दे वर इन द क्लब, लाइक दे वर ऑल हैप्पी। तो ध्रुव ने बोला ओके, मे बी इट्स नॉट द हेयर, मे बी इट्स नॉट द बॉडी, probably it's not the clothes as well. तो ध्रुव ने बोला what is it? And Arjun just had like one word, and he said sass. And Dhruv was like, sass? Like service as a software as a service? And Arjun's like, no, not software as a service. Dhruv, it's sass. It's style. It is you being comfortable about who you are. It's about knowing what to say and how to say it and how to stand and how to just like carry yourself. And Dhruv was like, how do I learn that? And then Arjun is like, there is a lot to it, but we should talk about this once we get back to Delhi, because obviously it's late at night and my pretty model girls are calling me. So I'll see you soon. And he just left. Vikram went with some other people. Arjun went back to his girls, and Dhruv spent the entire night just looking at everyone who was in the club. Started observing how do they talk, how do they walk, how do they carry themselves, and just being excited about what's going to come ahead, right? Because he's going to meet Dhruv, and he's going to meet Arjun in Delhi. By the way, all of it is fictional. By the way, I have like a script in front of me. If you're wondering if I'm making this on the spot, I actually have like a fictional script that is in front of me. But yeah, probably Dhruv and Arjun met in Delhi, because I'm going to tell you something very interesting now. आज 26 नवंबर हो रहा है, अराउंड दिवाली I met the real Dhruv. Like I've changed the name, but I met the real Dhruv after a very long time. And
The real Arjun is not a very good friend of mine, but like I still see him here and there. But I met the real Dhruv, and he was in some random club. I don't know why he was there, but he was just there for some reason. And he was in a group of people, and surprisingly, nothing has changed about him physically. Like he's still pretty much like half bald. उसका थोड़ा सा वेट कम हुआ है, not like a lot, like थोड़ा सा पहले से फिट हुआ है. But the way he was standing, the way he was smiling, the way he was communicating, everything has changed. And I think it's been like 1.5, 2 years since he started working on himself. And ऐसा नहीं होता कि like एक महीने में कुछ बदल जाता है. I'm telling you, like if you start today, it'll take you at least 1.5 years, 1.5, 2 years to sort of get to that level where you're pretty confident about how you look. And I was talking to him about this entire subject. I was asking him, ki, like, bro, like, what do you do? Like, how do you sort of figure out ki kya karna chahiye and how have you improved as a person? And he gave me like a couple of channels which I already follow. But I think there are some common tips that you folks can sort of use as well. Like if you feel that you don't have enough trust in yourself, if you feel that you have issues overcoming your self doubt, there are like some specific steps, and we will discuss them moving forward. But before I end this story, there's something very important that I want to share. That अगर आप अभी ये part 2 चल रहा है, right? अगर आप part 1 भी देख चुके हो, you would realize that you have some parts of Dhruv, you would also have some parts of Arjun, and you would also have some parts of Vikram in you. Like you will have all of them in you. It's not like you will be completely like Dhruv. It's not going to be like you'll be completely like Arjun, but you'll be sort of switching in between different personalities and in between different zones, in different states of mind. And there's this show called Entourage, and Entourage is produced by Mark Wahlberg, and he's a great actor, producer, great guy. And the entire show revolves around this one guy who has made really big in Hollywood. And he has a couple of friends, like 4 or 5 friends that live with him. They chill with him. There's a TV show. It's called Entourage. It's available on Disney Plus Hotstar. It's an HBO show. And it is said that Mark Wahlberg की life की story से inspired है, or all the stuff that they show in the entire series. My hypothesis is that all those 5 people are actually Mark Wahlberg cut different stages of life. Because there's one guy who's struggling to become an actor. There's one guy who's struggling to make money. There's one guy who's old and just way ahead of his prime time. So he's trying to feel young. He's trying to get back to where he was before. So my hypothesis is that those 5 characters are actually of the same person of different time zones. And अभी अगर आप ये कहानी सुन रहे हो, oh, there's one very interesting guy called Sports Sumi. Let me just block him before he spoils the entire vibe. But yeah, so I would recommend you to watch this video, the previous video, and figure out which character are you most relating to. And before I leave, let me share you some practical, tactical advice that you can use to sort of overcome your own self doubt. The first one is going to be a series of habits that you can implement from day one. One is as soon as you wake up, have a big glass of hot water and just try to think, what do you have in life? What do you already have? Not what you need, not what you want to achieve. What do you have? And how can you make the best of it today? Moving forward, I would recommend you to follow this YouTube channel called Charisma on Command. There's a YouTube channel called Charisma on Command. And I'm telling you, if you watch those videos, it's really going to help you as a person just to figuring out how to improve your personality. Second, get into a good gym. And somebody in the YouTube channel is like, story continue karo, story continue karo. I see you. I see you. But you need
you need some practical advice as well, because you really need this. The story is not going to help you until unless you actually, the series name is Entourage. But yeah, get a gym and start reading Think and Grow Rich. It's going to change your life for real. Brilliant, brilliant book. And get a skill and make a brand out of it. Like, be really good at something and make a brand out of it. Now, when I say make a brand out of it, it's not necessary that you need a logo, you need a website, or you need to open a YouTube channel. See, what is a brand? A brand is when people can trust you, right? And my shirt is from Zara, by the way. For those of you who are wondering, my shirt is from Zara. I went and I got this from Zara. So yeah, someone is asking what is my age. My age, actually, what do I look like? Can someone guess what is my age? It can be like a nice poll. But anyway, get good at something and build a brand. And when I say build a brand, I'm trying to convince you about building a brand in the real world. Every time you talk to someone, try to impress them with something that you know. Try to be a good communicator. Try to be a good person, so that your brand is that every time I meet this guy, he talks sense, he's helpful, and he's really good at what he does. That should be your brand. I'm not talking about building values and having a logo and having like some sort of stuff like that. But your brand should be that every time I meet this guy, he tells me something interesting, he's nice to people, he knows how to carry himself, he knows when to talk and when to shut up, and just does his job really well. And if you just focus on these basic things, your brand is going to improve with time. And when I say with time, please don't expect anything before 7 to 8 years. I am not expecting anything right now, to be honest. I've been trying to build my brand since a year, and I know that I still have like 5 to 6 years to reach that level. I can reach sooner as well, but I want to take it slow because I want to make it sustainable. So yeah, everyone is saying 21 and 22. Someone is saying 33 also. That someone is saying 21. There's someone who's saying 33 also. What a lovely state of mind to be in. Why is Myers Briggs types of UX designers? What? What is this random? अभी भी तुम ये UX design की question पूछ रहे हो मेरे से? Oh, I can see Bharg here. Folks, Bharg is a wonderful, wonderful, absolutely terrific guy. He makes amazing songs. In fact, if you are interested in rap, they have this song called Hathi Cheeti, and I've listened to it many times. It is a terrific song. So if you really want to learn from all the new creators that we have going on, I would recommend you to listen to Hathi Cheeti from Bhargan Rawal. With that, we are at 3:55 p.m. We will end this stream. I'm ending this first on YouTube. Folks, make sure you put up a story on Instagram if you liked today's live stream. We will come back with many more interesting live streams. I'll be waiting for your stories. I'm going to end the stream there. Let me click on end.